तो एक बार फिर से इस क्रिकेट चैनल पर ब्रॉट यू बाय डाफा न्यूज वी आर टॉकिंग क्रिकेट इट्स द फर्स्ट टी20 टुडे बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान दोस्तों आज के मैच मोहाली में खेला जाएगा और एक बार आपको याद दिला दूं ये आखिरी टी20 सीरीज है इंडियन टीम के लिए बिफोर द टी20 वर्ल्ड कप दैट स्टार्ट्स इन जून एंड रन थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द मंथ ऑफ जून लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई इन तीन टी20 से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेक्टर्स के मन में है pretty much we can guess how that squad is going to pan out और जो एक दो शायद मैक्सिमम तीन सवाल हैं प्लेयर्स को लेकर वो मेरे हिसाब से आईपीएल की शुरू होते ही उन सारे सवालों के जवाब हमारे सामने आएंगे बिकॉज अगर आप नहीं जानते तो सारे टीम्स को यानी कि सारे कंपीटिंग नेशंस टी20 वर्ल्ड कप के उनको आईपीएल के बिल्कुल बीच के तकरीबन उनको आईसीसी को अपने सारे स्क्वाड्स अनाउंस करने पड़ेंगे सो वी ऑल नोन दिस ever since the fixtures were out the first month of the IPL is going to be the final criteria for selection के राहुल के हमने बहुत बात करी कि जब से खबर आई है कि वो इस बार एलएसजी के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इफ ही गेट्स 3-4 50s in the first 6-7 or the first month of the IPL we can perhaps see him coming back and into the T20 squad but हम बात करेंगे केएल राहुल और आईपीएल के बारे में कुछ कुछ महीनों के बाद फिलहाल हम बात कर रहे हैं पहला टी20 खबर आई कल राहुल द्रविड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कि विराट कोहली जो कि 14 महीने बाद स्क्वाड में शामिल किए गए थे यानी कि टी20 आई स्क्वाड में वो पहला टी20 नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पर्सनल लीव लिया है क्योंकि आज उनकी जो बेटी है उनका जन्मदिन है वही बेटी दोस्तों कि जब उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा द बॉलीवुड एक्ट्रेस शी वाज एक्सपेक्टिंग and the daughter was due in December of 2020 was when Virat Kohli flew back from Australia after 36 all out at Adelaide Oval. तो मेरा ये सवाल है क्या बीसीसीआई को मालूम नहीं था कि विराट कोहली की बेटी के जन्मदिन ठीक उसी दिन होगा जब पहला टी20 होगा knowing Virat Kohli knowing the way that he's always informed the selectors about any personal leave he has to take well in advance मैं तो ये नहीं मानता कि विराट कोहली ने बीसीसीआई सिलेक्टर्स को उनसे नहीं कहा था कि देखिए 11 जनवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन है तो प्लीज मुझे उस मैच के लिए आप आप रेस्ट दीजिए या मुझे लीव ग्रांट करिए आई फुली बिलीव दिस वुड हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय विराट कोहली टू द सिलेक्टर्स व्हिच रेजेस द क्वेश्चन ये वही बीसीसीआई है दोस्तों जो जब भी एक स्क्वाड अनाउंस होता है अगर एक प्लेयर पहले मैच में नहीं है या एक मैच खेल के दूसरा तीसरा मैच के लिए शामिल नहीं होंगे तो बीसीसीआई more often than not adds a line saying that XYZ player will not be available for the first match. He will link up with the squad for the second match, third match, जो भी है तो इस बार वो एक लाइन नहीं आया कि विराट कोहली स्क्वाड में है लेकिन वो पहला मैच नहीं खेलेंगे Was an oversight from the BCCI selectors? Most likely क्योंकि ये वही विराट कोहली है दोस्तों जो हम जानते हैं कि 14 महीने से नहीं खेले टी20 तो मैं ये नहीं मानता और प्लीज आप भी अपनी व्यूज शेयर करिए मैं नहीं मानता कि विराट कोहली ने सिलेक्टर्स को नहीं बताया था कि थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक बट आई एम नॉट गोना बी देयर फॉर द फर्स्ट टी20 क्योंकि फिर आपने उनको स्क्वाड में नेम क्यों किया और फिर कोच ने बताया कि हाँ वो चंडीगढ़ नहीं आए क्योंकि उन्होंने पर्सनल लीव लिया एनीवेज विराट कोहली इज बैक द्रविड़ ने यह भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे दूसरे ओपनर रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं तो एक ओपनर को जगह खाली करनी पड़ेगी हमारा जो दूसरा ओपनर है वो है यशस्वी जायसवाल आई एम पर्सनली वेरी ग्लैड टू सी दिस because I think Yashaswi Jaiswal is perhaps a bit more suited to the T20I format than the other opening option, Shubman Gill. And the fact that Rahul Dravid said that we're going with Jaiswal, obviously एक left-hander आपको चाहिए. हालांकि टीम में स्क्वाड में और भी लेफ्टीज हैं लेकिन ओपनिंग ऑप्शन एक ही है जायसवाल और जितना भी उनको हमने देखा है आईपीएल में टी20 क्रिकेट में और खासकर इनकी जो छोटा सा टी20 करियर है he's looked the part. So Jaiswal gives you a left hand option, an explosive option who does well in the power play. So yeah, good to see that. Of course, you do feel bad for Gill. Like I think Gill को बहुत सारे मौके मिले हैं and he's just not been able to hold down his spot, going through a tough time. But no doubt, picked as the third opener, he's not going to get a game as per what Rahul Dravid said. बाकी देखना ये पड़ेगा कि आज के मैच के लिए जो विराट कोहली नहीं है उनकी जगह कौन लेगा या will the team go back to batting the kind of players they've been normally batting in the last 14 months when Virat Kohli has not been around क्या तिलक वर्मा एक बार फिर से खेलेंगे या संजू सैमसन खेलेंगे I don't know अगेन बात सिर्फ एक मैच की है क्योंकि दूसरे और तीसरे मैच के लिए विराट कोहली जरूर वापस आएंगे and then he'll be batting at 3 so एक मैच के लिए
कौन बैटिंग करेंगे नंबर 3 पर? If you want to guess from me, I would say Tilak Verma because he's been batting there in his brief T20I career. He's a young player, can hit boundaries. थोड़ा उनका फॉर्म ऊपर नीचे रह चुका है, but that happens when you're in your early 20s trying to find your way at the top. So I think for this one match, it will of course be Tilak Verma who bats for Virat Kohli. It's Mohali. There are runs on offer. We see, 160, 170 is often scored at this track. Winter का time है दोस्तों, बहुत बहुत ठंड है मोहाली में. So the ball might travel a bit. Afghanistan, of course, do not have Rashid Khan. A big blow, back surgery के recovery period में है वो. And head to head, the two teams have played what, 5 matches. I think one was a no result, and India have won 4-0. So India are the favorites. I don't think Afghanistan, despite India not having some key players around, I don't think Afghanistan are going to have what it takes, with all due respect, to beat India in any of these 3 matches. Yeah, I expect runs. I expect Rohit Sharma to once again chase, क्योंकि इंडिया का जो एक टेम्पलेट बना है T20 क्रिकेट में, वो चेस पे ही बना है. We will get to see the master of the T20 chase, Virat Kohli, in the second and third T20s. But for now, without Virat Kohli, like I said, I think Tilak Verma will be the one who bats at number 3. Not number 4. Suryakumar Yadav नहीं ने तो वो जरूर 3 पे खेलते हैं. So in the absence of Suryakumar Yadav, with Virat Kohli out of this match, I think number 3 this evening will see Tilak Verma. And beyond that, I really don't see anything surprising, given the fact that so many players have been dropped. Arshdeep will play. I think the two spinners, one will be a wrist spinner. You probably will see one of the off spinning all rounders, the left arm spinner Akshay Patel शायद खेलेंगे. उनका घर पे record अच्छा है Washington सुंदर से. तो no real surprises. And just to wrap up, like I said, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये है कि टीम मैनेजमेंट ने यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है. Because I think he's someone who, yes, he gives you a left hand option, but more than that, he's explosive. You need someone to score in the power play. मेरा ये मानना है कि अगर आप पावर प्ले के अंदर 75-80 रन बना सकते हो, जो कि बहुत मुमकिन है दोस्तों आजकल के इंडियन ट्रैक्स पर, बाकी के जो 14 ओवर में आप थोड़ा आराम से खेल के आप 210 215 का टारगेट बना सकते हैं, खासकर अफगानिस्तान के सामने. So yes, my prediction is India win today, and India win the next 2 matches for a 3-0 series win over Afghanistan. चलिए, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं. मैं देख रहा था जब मैं शुरुआत कर रहा था इस लाइव स्ट्रीम का. Let's see. By the way, hit the like button, guys. Hit the like button. Share this video in your WhatsApp groups. I know आप सभी कोई ना कोई WhatsApp ग्रुप के मेंबर हैं जहां पे क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती है. तो प्लीज इन लाइव स्ट्रीम्स को, इन लिंक्स को अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर करिए. पहला सवाल मनीष सोलंकी. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई. एक्चुअली, दो कोच साहब clarified things in his PC. Is there any truth in these Shreyas Ishan disciplinary action rumors? I would love to have hear strong words. Well, जो मैंने सुना है, कल बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था ईशान ईशान किशन को लेकर. His is, and from what I'm hearing, ये सूत्रों के अनुसार जो मैंने सुना है, और मैंने कल 2 लोग से बात किया. Ishan Kishan, and I'll keep it brief. Ishan Kishan did ask for leave. That's why he came back from the South Africa tour, from the Test tour. Look, Ishan Kishan बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, बहुत सारे मैचेस परफॉर्मेंस के बाद वो नहीं खेल चुके हैं. No doubt he's in a confusing time. He's probably hurting. Whether he has the maturity to deal with being dropped and rotated and carry the drinks, I won't comment on that. लेकिन ये सच है कि उन्होंने ब्रेक मांगा था टेस्ट क्रिकेट से. ये मैं सुन रहा हूं, 2 सूत्रों से मैंने कल सुना कि उन्होंने T20I सीरीज, इस सीरीज के लिए अपने आप को अवेलेबल किया था, but he was not selected. I don't think there's any indiscipline going on here. But in regards to Shreyas Iyer, ये मैंने कल सुना एक जर्नलिस्ट से कि कुछ हुआ है साउथ अफ्रीका में, which led the management and the selectors to feel somewhat wary about Shreyas Iyer's attitude and temperament. I don't know what it is. I've not been able to ascertain कि हुआ क्या, पर मैंने सुना कि कुछ ना कुछ हुआ है. तो कहीं ना कहीं इनका जो यहाँ नाम नहीं है T20 स्क्वाड में, I think it is something to do with some kind of disciplinary action they want to take against him. There are 5 test matches coming up. विराट कोहली, रोहित शर्मा जब वापस आएंगे तो श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे 3 पर. So I think they probably said, you know what, let's not get him in this. Let's get Shreyas Iyer to sort out his test game. We value him. So I think that's why he's been told to go play from Mumbai
and get your act together. बत्ती गई, बत्ती आ जाएगी वापस, कोई बात नहीं. Inverter will kick in. So again, I don't have any 100% guaranteed reason for what happened, but जो मैं सुन रहा हूँ, श्रेयस अय्यर को लेकर जरूर कुछ हुआ था. But yes, ईशान किशन is not here because he made himself unavailable. दही भल्ला एडिक्ट, क्या नाम है यार. आप और मैं दोनों दही भल्ला एडिक्ट हैं. वेल, नॉट एडिक्ट, बट आई लव दही भल्ला. हेलो जेबी, द नंबर वन क्रिकेट प्रेमी. यस यस यस, मैंने आज के मैच के लिए शायरी लिखी है. इरशाद, अथाह पैसा, अपार सम्मान, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अफगान जलेबी की तरह खा जाएंगे, यही हमारी टीम की पहचान. बिल्कुल सही है, क्योंकि अफगानिस्तान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, they don't really have the skills, and especially without Rashid Khan to beat India. So, लेकिन क्या बात, Irshad. Shreyans Sharma saying first they said Virat will play and sold all the tickets. Now they're saying Virat will not play. BCCI on another level of marketing. Who knows? That might be the case. Sell tickets to Virat. I hope that's not the case, but with this BCCI, you really cannot tell. गजोदर मिश्रा कह रहे हैं नमस्कार जय भाई. नमस्कार आपको भी. लव योर वीडियो. शुक्रिया दोस्त. मैं यूपी से आशा कर रहा हूं कि रिंकू का जलवा बरकरार रहेगा. जय हिंद. आई होप रिंकू को ये तीनों मैचेस में मौका मिलेगा, क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं, T20 वर्ल्ड कप में बेचारे को मौका नहीं मिलेंगे. क्या विराट रोहित ओपन करेंगे T20 में? सुबोध, आपने ये सवाल कल पूछा और मेरा जवाब वही है, नहीं नहीं नहीं, विराट हरगिज ओपन नहीं करेंगे. What's the controversy with Ishan Kishan? Like I just summed up a few questions ago, that's the controversy or lack of controversy. श्रेयांश भी कह रहे हैं हाँ विराट वाज सोल्ड, करेक्ट, यूज्ड टू सेल टिकट्स, हो गया. शाहनवाज जुड़े हैं बहुत बहुत दिनों के बाद. वो कह रहे हैं इंडिया ऑलवेज गो बैकवर्ड्स जस्ट फोकसिंग ऑन ब्रांड वैल्यू सिंस दे नो पीपल कम टू वॉच ओनली देम. Again, I can see a year without ICC trophy. Well, you can only see a year. I can see about 10 years without an ICC trophy, given how poor this team selection is. Anyways, क्या करें. Gajodhar Mishra ji कह रहे हैं, sir, do you think it's okay that senior players like Virat are afforded personal leave on such late notice, but juniors have to fight out for smallest opportunities at international stage? अच्छा सवाल है, लेकिन जैसे कि मैंने इस लाइव स्ट्रीम की शुरुआत में कहा था, मैं ये नहीं मानता कि विराट कोहली ने बीसीसीआई सेलेक्टर्स को नहीं बताया कि देखो मैं खेलना चाहता हूं, मैं अवेलेबल हूं, शुक्रिया आपने मुझे एक और मौका दिया 14 महीने के बाद, लेकिन 11 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे है. विराट कोहली प्रोफेशनल हैं, उनको क्रिकेट से बहुत बहुत प्यार है, वो कुछ भी करेंगे गेम खेलने के लिए. अगर उन्होंने ब्रेक मांगा है तो जरूर उन्होंने पहले बीसीसीआई से कहा. उन्होंने सिलेक्शन के बाद, उन्होंने स्क्वाड घोषित करने के बाद उन्होंने नहीं बोला बीसीसीआई को बाय द वे 11 जनवरी पहला मैच मैं नहीं हूं. नहीं, विराट कोहली हरगिज ऐसा नहीं करेंगे. मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई फॉरगॉट टू मेंशन दैट एंड इट्स जस्ट एन ओवरसाइट. आई नो बहुत लोग ये मानते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वो बस पिक एंड चूज के बेसिस पे आ रहे हैं, जा रहे हैं. आई अंडरस्टैंड दैट सेंटिमेंट, लेकिन आई वुड वांट टू बिलीव कि इन दिस केस विराट कोहली ने जरूर बताया होगा कि देखो पहला मैच इट्स कोइंसाइडिंग विद माय daughter's birthday. Of course you know the daughter's birthday date. Of course you know the date of the first T20I. मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बीसीसीआई ने उनको चुना और उसके बाद विराट ने बोला कि नहीं, I want to leave. I don't think विराट कोहली is that kind of person. रही बात आपके दूसरे कमेंट पर कि जूनियर्स हैव टू फाइट इट आउट. देखिए जूनियर्स विल फाइट इट आउट और सिर्फ टॉप लेवल के प्लेयर, उस लेवल के प्लेयर पर्सनल रीजंस के लिए ब्रेक ले सकते हैं. ऑफ कोर्स दीपक चहार इज नॉट that level of player, but Deepak Chahar, because of his ailing father, he chose to come back. So he chose not even to go to South Africa, and as well as someone like Ishan Kishan जो काफी खेल चुके हैं, पर वो बिल्कुल विराट कोहली के लेवल के आसपास नहीं है. जब उन्होंने पर्सनल लीव मांगा तो उन्हें दिया जाता है. I think the BCCI, no matter who you are, if you ask for personal leave, look at Mukesh Kumar. He came into a squad, played one match, and then took personal leave to get married. I don't think आज हम उस लेवल पे हैं कि छोटा प्लेयर को बोला जाएगा नहीं तुम पर्सनल लीव नहीं ले सकते. अगर मामला सीरियस है तो जरूर मेरे हिसाब से बीसीसीआई आपको लीव ग्रांट कर देगी. आकाश पूछ रहे व्हाई डू यू थिंक रोहित एंड कोहली हैव बीन, oh gosh Akash, we've been discussing this for the last 4 days. I'm not going to repeat myself, my friend. I think you missed the last 3 streams. We've discussed this topic to death, man. I'm not going back there again. Fact Life 2.0, why are they fitting Gill at 3? I don't think they will. Rohit Sharma will open with Jaiswal. Yesterday, Rahul Dravid said this. And despite being the third opener, you assume कि Gill 3 पे खेलेंगे एक मैच के लिए. I don't think so. I don't think Gill is going to play any of these 3 matches. That's just my gut feeling.
गुड आफ्टरनून अक्षर, कैसे हो? स्वप्निल कह रहे हैं कैन वी सी यूजी चक्रवर्ती, अक्षर एंड राहुल चहर मेक अ कमबैक? Akshay is in the squad. Chahal is not in the squad. Chakravarti, I don't think should play for India again. He's not that good. And Rahul Chahar is also. I mean, I don't think Rahul Chahar and Chakravarti are good enough to play for India. That's just my view. Akshay is there in the squad. He'll probably play today's match. Chahal, I think the team has moved on from him. So that's my answer. Ravi Shankar, you've asked a question that I've already answered about 15 minutes ago, so you know my answer already. Rahul is saying, Sir, I want to see how India bat in first six over in this T20 series. Yes, so do I. I've been very, very pleased with the kind of approach that the Indian team in the last 14 months without Rohit Sharma have batted in the top six overs. So I hope we see that aggressive intent. आकाश कह रहे हैं जय भाई वेस्ट इंडीज और यूएसए में क्या हाई स्कोरिंग मैच रहेंगे? देखिए, वेस्ट इंडीज में हम जानते हैं ट्रेडिशनली वहां पे बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। हाल ही में जैसे कि कल किसी ने कमेंट किया था एक लाइव स्ट्रीम पर, हाल ही के जो 5 मैच की श्रृंखला थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, उसमें काफी हाई स्कोरिंग मैचेस थे। लेकिन मैं कल आंकड़े देख रहा था, 125 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस में, इन 125 T20 matches innings in the West Indies, only about 8-9 times has 200 been reached. So मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज में 170 180 से ज्यादा स्कोर्स नहीं देखने को मिलेंगे इतिहास के बेसिस पर। आकाश, रही बात यूएसए की, तो फ्लोरिडा को छोड़ के ये सब ब्रांड न्यू वेन्यूज हैं, तो वी डोंट नो। आई कैन अस्यूम कि जब वेन्यू नया है तो पिच ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी, पिचेस पाटा रहेंगे। ग्राउंड्स तो हैं वहां के, बहुत बहुत छोटे ग्राउंड्स हैं वहां पे, but barring Florida, we just don't have any evidence of a single international T20 match being played in these grounds. So tough to say. I don't think so. Jaiswal, Rohit opening. Abhinav, I guess you missed Rahul Dravid's press conference. Yes, he's confirmed that Jaiswal and Rohit are opening in this series. Shaurya Pathak keh rahe, Shreyas Iyer should not be part of Indian Test squad. I will disagree. Like I said yesterday and 5 days ago, Shreyas Iyer should play all matches in India. He should not play in England. He should not play in Australia. He should not play in South Africa because his short ball problems are very obvious. But look at Shreyas Iyer's batting in India in those 2 Test matches with Bangladesh. मैं कब से कह रहा हूं, चिल्ला चिल्लाकर मेरी बात नहीं जाती है बीसीसीआई तक। The time has come to have home and away टेस्ट टीम्स। अगर आपको लगता है कि चेतेश्वर पुजारा ने 17वां दौरा शतक लगाया, if you value those runs, by all means, bring back Pujara and have him play in India. Pujara at this age is going to struggle on bouncy wickets. Just like Shreyas Iyer, despite being a very young, a very aggressive ball player, he's going to struggle. He struggled in 1 Test match in England and he struggled in 2 Test matches in South Africa, Test matches. But look at what he's done from his debut 100 and the 61 in the second innings to that innings of the year. He got that 92 on a raging turner in Bangalore. जहां पे सारे players flop हुए थे, Shreyas Iyer got 92 runs. Look at his stats. He is the best player of spin in the current Indian team alongside Rohit Sharma. I would say even better. तो मेरा ये मानना है कि अगर श्रेयस अय्यर को खिलाना है, उन्हें ये 5 मैच खिलाइए इंग्लैंड के सामने, वो बहुत चलेंगे। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे दिसंबर में, तो श्रेयस अय्यर को मत लेके जाइए आप। 11 बजे गुड मॉर्निंग लिख दिया था भाई, लेकिन स्ट्रीम तो 1:30 बजे शुरू हुआ बॉय। Thanks for clearing the air. It's actually good for Shreyas to play Ranji. बिल्कुल, he has to play Ranji. It should be a norm for future. No player should be above the bar. Well, I know what you're saying, but भाई नहीं होता हमारे देश में। राहुल कह रहे हैं सर, बहुत देने से इंडियन प्लेयर्स का टेस्ट में नंबर देखा। आई वांट एटलीस्ट 2 Test मैच। हाँ, तो कल मैं कुछ 2-3 दोस्त और कॉलेज के साथ बाहर गया था डिनर के लिए, और एक ने पूछा, जय भाई पिछले 5-6 साल से हम जो स्लो टर्नर्स, रेजिंग टर्नर्स, शार्प टर्नर्स हम ये देख रहे हैं, चलिए हमारी टीम जीत रही है, पर क्या हमारे प्लेयर्स के बैटिंग एवरेजेस कम नहीं गिर रहे? मैंने कहा बिल्कुल गिर रहे हैं। जब आप अपना पूरा स्ट्रेटेजी टर्निंग ट्रैक्स पे डालते हो, हाँ, घर पे आपके पास अश्विन, जडेजा, कुलदीप, अक्षर, आपके पास ऐसे अव्वल स्पिन बॉलर्स हैं जो आपको 10 में से 9 टेस्ट मैच जिता के देंगे। आप नंबर 1 रैंकिंग बहुत समय तक हासिल करोगे, आप WTC फाइनल हर बार पहुंचोगे, क्योंकि आप मैक्सिमम मैचेस अपने घर पे टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर खेलते हो, जहां पे बहुत बहुत कम टीम यहां के जीत पाई है। लेकिन क्योंकि आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका गेम खुद
क्वालिटी टर्निंग स्पिन के सामने गिर चुका है। तो एक तो बैटिंग एवरेजेस गिरने वाले हैं, और राहुल ये डबल सेंचुरीज, घर पे डबल सेंचुरी बनाना टर्निंग ट्रैक्स पे भाई बहुत 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 मुश्किल है। रोहित शर्मा ने पिछले 3 साल में दो स्कोर बनाए 160 के आसपास, इंग्लैंड के सामने और ऑस्ट्रेलिया के सामने। दोज वर डे वन स्कोर्स ऑन टर्निंग ट्रैक्स। उसके आगे नो बैट्समैन इज इवन गेटिंग टू हंड्रेड। क्योंकि कंडीशंस घर के बैट्समैन के लिए, विजिटिंग बैट्समैन के लिए इतने मुश्किल हो चुके हैं इंडिया में कि you're only going to see double hundreds when the tracks are flat. Who came the closest to getting a double hundred? Virat Kohli last year in the fourth test of the BGT when India had no option but to roll out a flat track. Because अगर वो एक और spinning track देते तो पिछले मैच के जैसे, इंदौर मैच के जैसे, लायन, Kuhneman or Murphy इनकी हालत खराब कर देते. So the closest to a 200, I think if I'm not wrong, in the last several years was Virat Kohli's 184, 85 और. तो I know मैं भी चाहता हूं कि डबल 100 बनेंगे, लेकिन पिछले 6-7 साल से स्थिति को देखकर मुझे लगता नहीं है कि ये मुमकिन है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक्स इतने हो चुके हैं कि मैच ही 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, 4 दिन में, तो मुश्किल है भाई. कुमार कनिष्क सिंह, हेलो जेमी, अब तो इंडियन क्रिकेट से एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गए, बस एंटरटेनमेंट के लिए देख लेता हूं इनके मैच, पर बिग मैचेस में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. और मैं कहता हूं कुमार कनिष्क, ये बिल्कुल सही तरीका आपने अपनाया. मैं चाहता हूं कि सारे व्यूअर्स यहां पर आप भी एक्सपेक्टेशन कम करके बस एंटरटेनमेंट के लिए इस टीम को फॉलो करिए, क्योंकि मैं भी ये करता हूं. Atul is back. Good afternoon. The 2024 T20 World Cup does not give much hope. No, it doesn't. IPL 24 will decide the World Cup squad. Yes, we discussed this earlier on this show. Warner for today's BBL match will land on the HG ground in a helicopter. Yes, he'll fly in from his brother's wedding. Shreyans Kene, players like Harry Brook is saying they want to be England #1 spinners. Harry Brook wants to be England, but Harry Brook doesn't bowl. So how can he? I don't know. I've not read this comment, but I don't think Harry Brook bowls. So maybe Will Jacks can aspire, but not Harry Brook. Any players to watch out for in Afghanistan squad? I remember Nabi and Gurbaz played super in T20 versus UAE. I don't recall any such new players. I think the squad is mota mota वही है. Cas Ahmed है, Nabi तो है अपना. There's two spinners, Cas Ahmed and Noor Ahmed. Noor Ahmed has been around for a while. Yuva Khiladi. I don't think there's any new players. The all-rounder they had in the World Cup. अजमतुल्ला क्या नाम है उनका, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अच्छे रन बनाए, वो सीमर है. आई थिंक ही इज वन, बट आई डोंट थिंक, माफी चाहूंगा, मुझे एग्जैक्टली कोई नया प्लेयर याद तो नहीं है दोस्त अफगानिस्तान स्क्वाड में, बट हाँ राशिद खान नहीं है. जय भाई, बिश्नोई खेलेगा या बस पानी पिलाएगा, वो भी यूजी की तरह? I hope he'll play, but I think he'll have to be probably carrying the drinks in 1 of 3 matches. Virat's daughter is bigger than nation. I mean, look, we've had this debate. It's a player's choice. Gautam Gambhir once chose to miss a test match because of his sister's wedding, और इतिहास गवाह है कि उस दिन के बाद से गौतम गंभीर ने कभी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाया. Maybe that's some strange कुदरत का निजाम type sign. Virat Kohli chose to fly back from Australia after 36 all out. Again, I understand being a father कि लोग चाहते हैं कि वो अपनी पहली बेटे या बेटी के जन्म पर हो. I don't think anyone should be denied the chance. I personally, again, I've not been in that situation, but I perhaps would not. I know MS Dhoni had that option. उन्होंने नहीं लिया. अब चलिए, जो 70s और 80s में हुआ था, सुनील गावस्कर, ये सारे प्लेयर्स जो अंतरराष्ट्रीय टूर पे थे, जब उनके बच्चे पैदा हुए, I'm not going to compare that, but look, it's an individual choice. Would I do it? Probably not, but then I'm not Virat Kohli, who's in Australia, thinking about the birth of his first child. So, but yes, I will say the birth of your first child and your child's third birthday, उसमें जरूर फर्क है. I personally would not skip a match for my country, but that's very easy for me to say it sitting here. I've never played for my country, so I don't know. But yeah, it's a very strange one, and I don't think any answer is right or wrong when it comes to this. Swapnil पूछ रहे, do you think Tilak Verma in Test cricket as a middle order batsman? In some time, in a couple years, yes. Ravi Shankar कह रहे हैं, Jamie, I've tagged you on Twitter about my article. Did you read that? No, I've not even opened Twitter for a day. I'll check it out.
अथर्व सिंह जय भाई केएल को 2 T20 वर्ल्ड कप दिए, क्या किया केएल ने? घंटा, बहुत बार कह चुका हूं। वो फर्स्ट ओवर मीडियम खेलता है, वो भी जिम्बाब्वे के साथ। नॉट डिजर्व, सो लेट्स गो विद संजू जदेश। आई एग्री, बट आई नो होगा नहीं भाई। जाएंगे तो सिर्फ केएल राहुल जाएंगे। जी भाई, यूएसए में जाकर वर्ल्ड कप कवर करने का इरादा है क्या? इरादा है, प्लान है। मैं यूएस तो जरूर जा रहा हूं जून में, बट अगर मैं मैचेस कवर करूंगा या मैं छुट्टी लूंगा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बिकॉज 8 साल हो गए और मेरे बहुत से कजन मुझे काफी साल से बुला रहे हैं। 2 कजन से मैं अभी पिछले हफ्ते मिला, तो मैं यूएस जा रहा हूं जून में, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई डू द मैचेस और आई टेक अ ब्रेक। सो लेट्स सी, आई अप्लाई फॉर द वीजा, लेट्स सी। Shreya Iyer is the best player of spin in the world. Don't know about that, but in the Indian team, I think he's the best player. Just hoping at least 3 test matches will get good test pitches and potholes on 2 test matches are okay. In 5 test matches is criminal. I understand your sentiment. शिखर सिंह कह रहे हैं जय भाई आईपीएल से कौन कौन सिलेक्ट होगा खिलाएंगे, तो ये वही जो इनके मन में है। ऑल हेल लॉर्ड वी शंकर। शिखर नहीं, मैं ये मानता हूं कि इस करंट पूल के बाहर से कोई प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन सबकी नजरें जो हैं वो केएल राहुल पे है। जब से केएल राहुल को मालूम पड़ा कि रोहित और विराट वापस आएंगे, यानी कि 1 और 3 जगह लॉक्ड है। 2 पे या तो जायसवाल या गिल या गायकवाड़ होंगे, यानी कि दूसरा ओपनर, और 4 पे जो है वो स्काई है। तो जब केएल राहुल को मालूम पड़ा कि पहले टॉप 4 में मेरा कोई चांस नहीं है, दैट्स व्हेन ही वेंट एंड टोल्ड एलएसजी कि मुझे इस साल मिडिल ऑर्डर में खेलना है। साफ मालूम है कि केएल राहुल का मकसद ओपनिंग से, जहां पे वो हर आईपीएल में करते आए हैं बहुत साल से, जब वो व्यक्ति मिडिल ऑर्डर में खेलने की इच्छा एक्सप्रेस करता है तो साफ जाहिर है कि उसको T20 वर्ल्ड कप में एक जगह छीनना है किसी से। एंड आई नो दैट केएल राहुल विल स्कोर 4 to 5 50s in the first 7 matches of the IPL. After those 7 matches is exactly the time when the BCCI has to give its squad to the ICC for the World Cup. और लिख के लीजिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जैसे कि आप में से कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का कीपर केएल राहुल ही होंगे। एक वो होंगे, दूसरे होंगे जितेश शर्मा। If Sanju Samson wants to go to the World Cup as a keeper, then he should spend the entirety of the IPL batting at number 5, क्योंकि नंबर 3 पे विराट जाएंगे। तो संजू सैमसन क्यों इतने साल से राजस्थान रॉयल्स के लिए 3 पे खेलते हैं, मेरे समझ से बाहर है। 1 से 4 लॉक्ड है, जगह बनती है 5 और मे बी 6 पे। अगर संजू सैमसन को जितेश, क्योंकि जितेश ऑलरेडी 6 पे खेलते हैं, इस साल केएल राहुल 5 पे खेलेंगे आईपीएल में। इफ संजू सैमसन वांट्स टू पुश केएल राहुल आउट ऑफ द वे, he should bat at number 5 for the whole IPL and score about 550s in the first 1 month. Then maybe he goes. But otherwise, I see KL Rahul going. Shaurya Patak saying nobody is making flat tracks anymore since the dawn of WTC. No, Pakistan tracks are always flat. New Zealand tracks have become increasingly flat. And England, look at the Ashes this year. The tracks were very flat. Because baseball becomes successful only on flat tracks. So Shaurya, I will disagree with you. Look at the last 2 tours to Pakistan, 3 tours. New Zealand, England, Australia all played 8 roads were played on. Sri Lanka, the ball doesn't spin as much as it used to a few years ago. And England, Birmingham, that test match was so flat. So a lot more flat tracks are being turned out since the WTC came around. Harry Brook wants to bowl and he's working on spinning to be competitive. अच्छा, ये मैंने नहीं सुना. Harry Brook wants to bowl. God bless him. I think Harry Brook's record in India is pretty terrible. So if I were Harry Brook, I'd want to improve my batting to stay in the team. But to each his own. SS98's back with his 11 for T20 World Cup. Virat opening? नहीं होगा. Yep, you've got Rahul, no surprises. Hardik, Rinku, Akshar, Chahar, Kuldeep. Virat Kohli is not going to open. It'll be Jaiswal opening. So Rohit, in my book, it'll be Rohit, Jaiswal, Virat, Sky, for Rahul, Hardik, Rinku नहीं खेलेंगे. अक्षर कुछ मैचेस खेलेंगे. चाहर, कौन सा चाहर? दीपक चाहर? नहीं, दीपक चाहर won't go. कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप. You gotta find another all-rounder for चाहर, my friend. बाकी ठीक है. Gajodhar Mishra कह रहे हैं simple question. Why do they bench players wearing neon vests and carrying drinks? Can't they get some staff for that? नहीं, staff नहीं है. This is in all sport. It's always a member of the squad doing it. ये तो काफी फालतू सवाल हो गया दोस्त.
मनीष कह रहे हैं विल बी गुड टू बेंच गिल, ही इज मोर सुटेबल फॉर लॉन्गर फॉर्मेट्स। बिल्कुल। अभिनव कह रहे हैं यूएसए तो आपका घर जैसा है। घर तो नहीं है, बट हाँ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार वहां पे हैं। तो फिर कीपिंग भी करेगा केएल आईपीएल में, वरना क्या मतलब जय भाई। हाँ करेगा वो, बिल्कुल। ही वाज कीपिंग, ऑफ कोर्स डिकॉक है, बट दिस टाइम केएल राहुल आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही स्टार्ट्स कीपिंग, क्योंकि वो बंदा कुछ भी करेगा टीम में आने के लिए। If Pant is fit and has a good IPL, he should walk into the World Cup team. Nahi, my friend. I love Pant. I would love to see him. But Rishabh Pant is going to have to play at least 6 months of cricket to come back in the team. He just started walking again, started swimming, doing leg strengthening. Abhi bahut bahut dur hai wo. Why no Kishan in your opinion for World Cup? Because KL Rahul will come back. If KL Rahul doesn't come back, then Ishan Kishan will compete with Jitesh and Samson. But he's not there because KL Rahul is Rahul Dravid's number one player. Ravi Shankar keh rahe, I am not seeing Virat Kohli in T20 World Cup squad. Well, Ravi Shankar, if he was not going to be there, why would he play these three matches? He's definitely going to the World Cup. I'm seeing Tilak Varma batted three in World Cup. Your thoughts? Nahi, nahi, bhaiya. If Virat Kohli has been called back, Ravi Shankar, after 14 months of not playing a single T20I, it's not for two matches against Afghanistan. It's for the T20 World Cup. Baseball heroics will bite the dust here. Probably it's going to be very tough for those players to do baseball. देखिए baseball, like I said, baseball only works on flat tracks. Name me one test match जहां पे baseball green top पे successful रहा है, जहां पे turning track पे रहा है। अब तक baseball एक turning track पे खेला ही नहीं गया। पाकिस्तान में जो ये टीम जीत के आई, वो तीनों के तीन पाटा क्या, वो सीमेंट के पट्टी थे वो स्ट्रिप्स। इंग्लैंड में जानबूझकर इन्होंने एशेज के लिए चार बैटिंग फ्रेंडली फ्लैट ट्रैक्स इस्तेमाल किए। That's why James Anderson's numbers have dipped, because Anderson, he needs swing, but baseball doesn't allow for swing and seam. So पता नहीं, I don't know how baseball will work, but yes, if England lift their game, तीन में से दो टेस्ट मैच तो वो लोग जीत जाएंगे। Atul is saying, Jay bhai, I would any day prefer Pandya, Rinku, Jitesh, my 5, 6, and 7 in place of Rahul. Same here, same here. Plus, Iyer on those West Indies pitches might slow down in the Super 8. If he look, I don't think Iyer is going to play, because where will he play? Rohit confirmed, Jaiswal slash Gill confirmed, तीन विराट कोहली confirmed और चार स्काई। श्रेयस अगर अगर T20 खेलते हैं तो चार से नीचे वो नहीं खेल पाएंगे। तो श्रेयस अय्यर is not going to the T20 World Cup. Your top four is going to be Rohit, Jaiswal slash Gill, विराट कोहली, स्काई। उसके बाद आपको एक कीपर खिलाना पड़ेगा, तो पांच पे मोस्ट लाइकली केएल राहुल, छह पे पांड्या, फिर आपके बॉलर्स। तो अय्यर इज नॉट गोइंग टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप, सो या दैट्स वेरी ऑब्वियस। अभिनव कह रहे हैं केएल राहुल ऑरेंज कैप के टॉप 5 में तो आएंगे इस आईपीएल में हर बार की तरह। बिल्कुल, वो टॉप 3 में आएंगे, टॉप 4 में आएंगे, ऑरेंज कप लेके जाएंगे। बेचारे उनकी टीम कभी जीत नहीं पाएगी। Kishan has shot himself in the foot with his mental fatigue statement. Sanju was surprised. No, I will disagree. If someone needs to take a mental break, he has to be granted. You cannot have someone struggling with mental fatigue in this team. So I totally get it. He wants a break. It's his choice. He'll come back. Any update on Pant comeback? Pant is apparently trying to make it for the IPL. I think he should be okay for the second half of the IPL, but T20 World Cup, no. I mean, come on, guys. Don't ask such silly questions. Pant cannot come back without 6 months of cricket. Ideally, I would have loved to see him play the Ranji Trophy in January, in February, take a break in March, go back to the grind, do some more core strength, then play 2 months of the IPL, and then come back for India's next series in August. But uh, अगर बाय चांस वो पूरा आईपीएल भी खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो नहीं आएंगे, बिकॉज द स्क्वाड विल बी अनाउंस्ड हाफवे थ्रू द आईपीएल। और 6-7 मैच अगर खेलते भी है पंत, नॉट इनफ टू कम बैक। नो चांस, नो चांस। श्रेयांश पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक ऋतुराज इज आवर नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट प्लेयर? ही इज वेरी गुड, बट आई थिंक ही इज समवेयर डाउन द लाइन। ही इज स्टिल नॉट a first choice player. He is one of those players, he only gets a chance when someone's injured or someone is rested. So maybe in 2 years down the line, when all these big players retire, he might be, but फिलहाल तो नहीं भाई। गजोदर कह रहे हैं, आशा है कि इंडिया टेस्ट में बेसबॉल बकवास बॉल हो जाएगा। चांस है। Those stories are true about Ishan Kishan. Well, I spoke to two people. One is saying yes, one is saying no. So we'll never know until Ishan Kishan or the BCCI comes out and speak. You and I will never know the truth, my friend. Anup is saying, is there any importance of this series? नहीं 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 नहीं। अनूप, आप तो रेगुलर व्यूअर हो, आप तो जानते हो
नवंबर 19 के बाद जो भी व्हाइट बॉल T20 सीरीज ये टीम खेली है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 मैच हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के सामने 3 मैच हो, चाहे वो ये 3 मैच हो अफगानिस्तान के खिलाफ, ये सारे कितने, ये 11 मैचेस अटरली इनकॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि एक तो आप ट्रॉफी नहीं जीत पाए नवंबर 19 को, और जितने भी प्लेयर्स हो, साई सुदर्शन खेले साउथ अफ्रीका में, तिलक वर्मा खेले, जितेश शर्मा आए, जो भी आए, इन सबको हटना पड़ेगा जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल वापस आएंगे। तब से मैं कह रहा हूं, नवंबर 20 से कह रहा हूं, ये सारे व्हाइट बॉल बायलैटरल सीरीज कुछ काम की नहीं है। Off topic, but somehow I find it surprising that an upcoming player like Ishan Kishan refused a test opportunity in SA for mental break. But he was not going to play anyway. So what I'm hearing from people is he knew that once again he was not going to be picked. Apparently, he's got a lot of issues. Again, look, when it comes to mental issues, forget the backstory. When someone says, I need a break, or the BCCI says someone has asked for time, personal time, we cannot question it because we don't know the truth. We don't know the extent of what that said player is going through. So, without any evidence, without any factual, concrete proof of what happened, I'm not going to comment. I'm going to say if somebody asked for personal break to deal with something, we have to grant it. चाहे वो मैच के बीच हो, चाहे वो मैच के बाद हो. I mean, that's how it is, my friend. रिंकू इज नेसेसरी जेमी भाई, उसके जैसे गेम चेंजर, अरे शिखर, आप मेरे ख्याल से आप मेरी स्ट्रीम नहीं देखते हो। इतनी बार मैं कह चुका हूं कि रिंकू से बढ़िया आजकल T20 मिडिल ऑर्डर प्लेयर है नहीं हमारे पास, लेकिन अफसोस की बात है कि T20 वर्ल्ड कप में रिंकू पीली बेब डाल के, हरी बेब डाल के ड्रिंक्स देगा, क्योंकि जब जब 10 प्लेयर वापस आएंगे तो 10 प्लेयर को खाली करना पड़ेगा जगह, और उनमें से एक है रिंकू सिंह। और ये मुझे बहुत दुख देता है ये बात कि रिंकू जैसे बढ़िया फिनिशर, जिनके आंकड़े बेहतरीन हो, उस बंदे को बड़े प्लेयर्स के वापस आने से उनको बाहर बैठना पड़ेगा। Afghanistan without Rashid isn't worth competing. Their strength almost have seniors can stat pad now. Fact. Chaliye, last couple of questions, then I've got to go get lunch. Swapnil saying, I can understand about Rohit and Virat, but how did inconsistent players like KL Rahul and Hardik Pandya become India's favorite, that they get chances even after multiple failures, whereas others don't? I don't know. Star value, status, social media pull, contacts, jugaad. Who knows? Who knows? But I understand where your comment is coming from. Atul Kere, orange cap should also take into consideration the strike rate. Absolutely, it should. But again, ratings and rankings and caps, they just look at one thing, overall tally. So, chodo inko. Indian team should have played T20 against England instead of Afghanistan. Why England? Because you're going to be playing them in a 5 test match series. So basically, India should not have been playing any T20s. All these players should have gone to the Ranji Trophy for 1 round, if not 2 rounds, because they're going to get a stiff test from England. So, kya kare? Anyways, guys, thank you for watching. Almost 38 minutes. Love all of you. Thank you for your comments. If anyone new is here, please subscribe. I hope all of you have already subscribed. You already liked. Stick around. आपसे मैं मिलूंगा मैच के बाद. Take care. जय हिंद.